Hello student, today we will study second chapter The Tiger King, which is written by Kalki. We will study the later part of the chapter. In first part we studied there was a king, Sir Jilani Jangjang Bahadur. When he was 10 days old, the astrologer came and gave the prediction that one day he will die. He was only 10 days old. He was an infant only. At that time, he said that the astrologers should tell him about the kind of death. कि मरना तो सबको है ही, लेकिन एस्ट्रोलॉजर अगर इसकी मृत्यु काइंड ऑफ मैनर बता दे तो बहुत बढ़िया होगा. एट दैट टाइम एस्ट्रोलॉजर वॉज सरप्राइज के an infant 10 days old baby is asking such a super question, intelligent question. At that time the astrologer said that कि उसका जन्म जो है वो जोडाइक मतलब राशि जो है वो बुल में है, वृषभ राशि में है, तो उसकी मृत्यु टाइगर से होगी बिकॉज टाइगर एंड बुल्स आर एनिमीज. In this way the child grow up. After that देर वॉज नो एनी मिरेकल, कुछ भी मिरेकल हुआ नहीं था. मिरेकल कब हुआ? जब वो 10 दिन का था तभी. नाउ ही बिकम 20 years ओल्ड एंड ही बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट. क्या नाम है स्टेट का? प्रतिबंधपुरम. एवरीबडी न्यू दैट, द विलेजर्स न्यू दैट द किंग विल बी किल्ड बाय द टाइगर. ही ब्रोट अप इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाय इंग्लिश नैनी, बाय इंग्लिश काउ. सब कुछ उसका बढ़िया था. एज द अदर प्रिंस ग्रो अप. नाउ द रूमर केम इन टू द ईयर ऑफ किंग. उसके कान में ये बात आती है, रूमर, कि इसकी मृत्यु टाइगर से होगी. सो ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर एंड उसने पहला टाइगर मारकर बताया. एंड ही wanted to prove himself, and that is why he called the astrologer in his palace and show him the dead body carcasses of tiger. Now he asked, what do you say, Mr. Astrologer? Here astrologer was so confused, little bit afraid, and said that कि आपकी 99 tiger, he can kill the 99 tigers, but 100th one tiger will kill द किंग, कि उसका 100वां जो टाइगर होगा उसके साथ उसकी मृत्यु होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट द रिमेन चैप्टर. व्हाट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? ही आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर. एंड व्हाट इफ ही किल्ड द 100th वन? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. He said that he will tear up all his books. Books को जला देगा, तोड़ देगा, जला देगा. And he will also cut off his tuft. Tuft means bunch of hair. अपनी चोटी भी काट देगा. एंड ही विल बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. वो इंश्योरेंस का एजेंट बन जाएगा. एंड द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट. इनकोहेरेंट मीन्स confused, muttered, because he was sure that, and he was quite confident on his astrology, and that is why he said these things. From that day onward, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhpuram. Now there was the celebration time. Why there was a celebration time? The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja, because there was ban on hunting the tiger. Only Maharaja will hunt the tiger. The proclamation means announcement. एक प्रोफेशनल अनाउंसमेंट होती है वो. अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. Also the proclamation announcement was issued, if anybody dare to fling, मतलब fling means attempt, कि सिर्फ एक पत्थर उठाकर भी कोई टाइगर को मारेगा, all wealth and property would be confiscated. Confiscated means taken away. उसकी property छीन ले जाएगी. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the hunting
tigers. Means he decided he will not do anything. He will only hunt the tigers. No any other matters will be dealt by him. मतलब कि राजा का जो कार्य होता है कोर्ट में जाना, टू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, वट एवर द इश्यूज आर देयर, वो कुछ भी हैंडल करेगा नहीं. He will only kill the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. Now, he found his ambition. उसको अपना ambition, ध्येय जो था, गोल जो था, वो मिल गया था. Initially, it means that at the beginning, starting से ही उसको ambition मिल गया था. Not that he faced no dangers. Even he had no any kind of feelings of dangers. There were times when the bullet missed its marks. The tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was Maharaja who won. And student, he fought with the tigers. Sometimes he missed his bullet. कभी कभी उसकी बुलेट जो होती थी वो मिस्ड हो जाती थी. But yes, he fought with the tigers with his bare hand. Bare hand means open hands. Without any weapons, he fought with the tigers. Tiger के साथ वो फाइटिंग करता था. And every time he won. और हर बार वो जीतता था. It indicating that how brave he was. कितना brave था. He was brave physically. But क्या हम कह सकते वो mentally brave था? He was so brave and courageous king. He fought bare hands. He fought with tiger with his bare hands. अपने खुले हाथों से वो टाइगर के साथ लड़ता था. And every time he won. हर बार उसकी जीत होती थी. एंड दैट इज़ वाई फर्स्ट पार्ट में हमने ये कहा था कि हर कोई ऐसे राजा से मिलना चाहेगा. बट वहाँ पर ऐसा भी था कि भरत ने जब कहा कि दशरथ अब नहीं रहे, मतलब उसका स्वर्गवास हो गया, ये राजा भी मर गया. सो नो वंस डिज़ायर विल बी फुलफिल बिकॉज किंग वॉज died. At another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British official visited Pratibandpuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandpuram. Here, student, because of completing his desire, many times king find himself in dangerous mode. अपने आप को कई बार वो डेंजरस मोड में देखता है. फर्स्ट टाइम, मेनी टाइम्स व्हेन ही फूट विद द टाइगर्स विथ बेयर हैंड्स. जब वो टाइगर के साथ बेयर हैंड से लड़ता था, मीन्स इट्स अ रिस्क ऑफ लाइफ. सेकंड टाइम, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स विजिटेड प्रतिबंधपुरम एंड दैट ऑफिसर्स वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. वो भी शिकारी था, ओनली टाइगर्स का. And he was fond of, and he wanted to take the photo with the carcasses and dead body of tigers. वो बहुत शौकीन था उसके साथ फोटोग्राफ लेने के लिए. We also have seen in many monument places कि ब्रिटिशर से राजा है, उसका डेड बॉडी के टाइगर के साथ उसकी फोटोज़ होती है. And these Britishers also fond of बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हेड शॉट. जो उसको मारता था उसके साथ उसको फोटो लेने में बहुत शौकीन था. एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम एंड दैट ब्रिटिशर्स वांटेड टू टेक द फोटो ऑफ द टाइगर्स. ही वांटेड टू हंट द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. बट हियर इट वॉज बैन ऑन हंटिंग द टाइगर्स. But the Maharaja was firm in his resolve. Resolve means purpose, will. वो अपने purpose में बहुत ही firm थे. Firm means strong, determined. क्या था उसका firm, उसका जो determination था वो क्या था? He wanted to kill 100 tigers. And that is why he banned on hunting the tigers. उसको अपना 100 टाइगर का टारगेट जो था वो पूरा करना था. And that is why there was a ban on hunting the tigers. But here, that Britishers came and wanted to hunt the tiger. But here Maharaja did not allow him. He refused permission
I can organize any other hunt. He said that he can organize, manage कर सकते other hunt means you may go on a boar. Boar means male pig. क्या पिग को मार सकते? You may conduct a mouse hunt. माउस को मार सकते but not the tiger. We are ready for a mosquito hunt. He said that he can hunt pig, he can hunt mosquitoes, he can hunt mouse, but tiger hunt? That's impossible. He can hunt anything but not tiger. The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. Here the word Durai. Durai means chief. तमिल लैंग्वेज में दुराई को चीफ को दुराई कहा जाता है. He also sent a message. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcasses. He said that okay, वो हंट नहीं करेंगे. महाराजा could do hunt. महाराजा हंट करेंगे. He will have only standing a gun with the carcasses of the tiger. उनको तो सिर्फ फोटो में इंटरेस्ट था. He did not want to kill or hunt the tiger. सिर्फ राजा हंट करे और वो सिर्फ फोटोग्राफ के साथ वहाँ पर खड़े रहे. सी स्टूडेंट, यहाँ से हमको कितना पता चलता है? Whoever is in power, कोई भी पावर में आता है, वो पावर में आने के बाद कितनी क्रूअलिटी वो बता सकते हैं. The powerful man has a power. It means use it in a bad manners, use it in a bad purpose? No. तो यहाँ से हमको एक मैसेज ये मिलता है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू लिव ऑन द अर्थ. पूरी पृथ्वी में रहने का अधिकार सबको है. बिकॉज गॉड हैज सेंट एवरीबडी. भगवान ने सबको भेजा है. इट इज़ नॉट अवर राइट टू किल द एनिमल्स. और यहाँ पर उसके साथ ओनली ही वॉन्टेड टू टेक अ फोटो विद द कार्कासिस ऑफ द टाइगर. But the Maharaja would not agree even to this proposal. Maharaja wasn't agree even to this proposal. ये proposal के साथ भी वो agree नहीं थे. एक तो उसको मारने भी नहीं देना है और फोटो भी नहीं खींचने देनी है. If he relented, the word relented means become less strict. If he relented now, what would he do if other British officials turned up for the tigers? And turned up means received, reappear or arrive, whatever. He was afraid. What would happen? Or if he relented, थोड़े से less strict हो गए, what would he do? क्या करेंगे if other Britishers arrived for the tiger's hunt? उसको लगा कि ये इतनी भी परमिशन दे दूंगा और उसके फोटोज के साथ अगर इसको देखेंगे, मे बी or probably other Britishers arrive and demand for the tiger hunt. So here king doesn't want to take any risk, and that is why, as he wanted to complete his ambition of killing the 100 tigers, he refused the proposal of the Britishers. Because he prevented the British officials from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. Now it is the another dangerous मैटर कम्स इन हिज वे. एक बहुत बड़ी समस्या, डेंजरस समस्या उसके सामने आ गई. नाउ दिस टाइम दिस वॉज नॉट ऑफ हिज लाइफ रिस्क. उसकी लाइफ का कोई रिस्क नहीं था, बट येस उसकी किंगडम, उसका जो राज्य था उस पर अब एक खतरा मंडराने लगा. विच वन बी? एज ही रिफ्यूज्ड, एज ही प्रिवेंटेड द ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, नाउ द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम. अब उसकी राज्य छीन लेने का खतरा मंडराने लगा. द महाराजा एंड द दीवान held deliberation over this issue. Now they thought carefully on this matter. Deliberation means careful thought or discussion. Careful discussion was made on this matter. What was the matter? It was matter, or it was the danger of losing his kingdom. As a result, now they discuss, and as a result, a telegram was dispatched. Dispatched means sent
Forthwith means without delay. Immediately the telegram was sent to a famous British company of jewelers in Calcutta. Send samples of expensive diamond ring of different designs. Now they sent a telegram or letter to a British company jeweler in Calcutta, and they asked for the samples of expensive diamond rings. Now here king and diwan डिस्कस्ड एंड दे थॉट कि उसको कोई गिफ्ट विफ्ट दी जाए और इस तरह से उसको हैप्पी किया जाए. सम 50 रिंग्स अराइव्ड. सैंपल के लिए सम 15 रिंग्स वर अराइव्ड. द महाराजा सेंट द होल लॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. नाउ ही सेंट ऑल द 50 रिंग्स टू दैट ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. उसकी बीवी को भेज दिया गया. The king and the minister expected the Durai Sani to choose 1 or 2 rings and send the rest back. Now they both thought that means Durai Sani means chief की जो बीवी है, she will choose 1 or 2 कि शायद इसमें से 1-2 चूज करके दूसरी वापस भेज देगी. They means all the other rings were be sent back. Within no time at all, the Durai Sani sent her reply. थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. मीन्स दुराई सानी जो थी ब्रिटिशर्स वाइफ जो थी दुराई सानी, इट मीन्स द चीफ्स वाइफ इन तमिल. तमिल में उसको दुराई मतलब चीफ और दुराई सानी मीन्स चीफ्स वाइफ. शी सेंट अ रिप्लाई दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट. इन 2 days a bill for 3 lakhs of rupees came from the British jewelers. Now after 2 days the bill was arrived. कितने लाख का था? 3 lakh rupees bill. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. Retain means keep. Here Maharaja took a sigh of relief. At least his किंगडम वॉज नाउ नो मोर इन डेंजर कि अब उसका जो है राज्य लिया जाएगा नहीं. सो वॉट इफ 3 lakhs ऑफ बिल ही हैड पेड. क्या हुआ अगर 3 लाख का बिल उसने पेड किया, बट ही हैड मैनेज टू कीप हिज किंगडम. स्टूडेंट, नाउ आई एम आस्किंग यू 2 questions. प्लीज नोट दिस 2 questions इन योर notebook right now. The question 1 is, when was the Tiger King in danger of losing his throne? I am repeating the question. When was the Tiger King in danger of losing his kingdom? Question number 1. Now question number 2. How did the Tiger King manage to retain his kingdom? I am repeating the question. How did the Tiger King managed to retain his kingdom? So these 2 questions you have to write in your homework book. So here first part explain, second part explain, third also explain. Now we will study the 4th part of this chapter. Part 4th. The Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful. He was successful in his hunting the tigers. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. How many? 70 tigers he killed or he hunted. And then an unforeseen muddle brought. Muddle means difficulties. Brought his mission to a standstill. Standstill means stop for few days or stopped, we can say. The tiger population became extinct and the forest of Pratibandhpuram. Now extinct means finish. Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be sought by British hands alone. Now here, as his ambition was standstill there, now what will he do? Now he thinks that who knows whether the tigers practice birth control. Maybe or probably they have or they knew the birth control or committed harakiri.
Harakiri means a formal way killing yourself by cutting open your. Harakiri is a Japanese word. Harakiri means अपने आप को स्वॉर्ड से मार देना. So here he thinks that क्या वो बर्थ कंट्रोल कर रहे टाइगर या फिर अपने आप को ही मार रहे और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. किसके हाथों से मरना चाहते? डू दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड? क्या ब्रिटिशर्स के हाथों वो मरना चाहते? दैट इज वाई दे रेन अवे. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun or mine? He asked, brandishing his gun. Brandishing means threatening someone by showing the gun in the air. हवा में घन को दिखाते हुए कहा कि डू यू नो दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन, कि 30 टाइगर अभी 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट by his gun or by himself. And he also threatened the Diwan. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. As he threatened him, the Diwan was shuddering. Shuddering means shivering, to see the scene of the gun and the scene of the angry king. The Diwan cried out, चिल्लाता है और कहता है कि आई एम नॉट अ टाइगर. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? किंग कहता है कौन तुझे तेरे जैसे इडियट को टाइगर कहेगा? नो, आई एम नॉट अ गन. नाउ दीवान सेड दैट ही इज नॉट अ गन. यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन. नाउ किंग सेड दैट कि वो तो ना तो टाइगर है ना तो गन है. दीवान साहब, आई समन्ड मीन्स कॉल्ड, यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज. I have decided to get married. Now the king told Diwan that neither he called him for showing him his gun or showing him to kill, but the purpose is different. क्या गन और मारने के लिए नहीं बुलाया. Summoned means called, but he wanted to marry, to get married. He decided to get married. The Diwan began to babble even more. अब वो बड़बड़ाता है. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, he said that he had already 2 wives. और वो राजा के साथ शादी करेगा तो don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. उसने कहा कि कौन पागल है, कि क्या नॉनसेंस है, कि why should I marry you? किंग कहता है कि मैं तुझसे शादी क्यों करूँगा. What I want is a tiger. मैं तो सिर्फ टाइगर चाहता हूँ. When king said that, Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger is more than enough for the state. It doesn't need a tiger queen as well. He said that. यहाँ पर फिर वो अपनी मूर्खता बताता है. Your Majesty, please think it over. Your ancestor, आपके जो पूर्वज थे, were married to the sword. वो तलवार के साथ शादी करेंगे. If you like, marry the gun. गन के साथ शादी कर लीजिए. A tiger king is more than enough for the state. यहाँ पर टाइगर किंग इनफ है. It doesn't need a tiger queen as well. अब कोई टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है. स्टूडेंट, वी फाइंड दैट द दीवान वॉज फुलिस. थोड़ा सा फुलिस भी था. और हमने ये भी देखा है कि जब कोई पावरफुल पर्सन होता है, उसके आसपास जो सेक्रेटरी होते हैं, वॉट एवर द पीपल वर सराउंडेड, जनरली वो क्या करते, जो भी ये लोग कहते उसको वो एक्सेप्ट कर लेते. उस पर अपने जो विचार वो कभी कहते नहीं. वरना कभी उसने कहा ही नहीं कि टू किल द टाइगर इज़ अ सिन, कि इतने सारे टाइगर को मारना पाप है. उसने कभी हिम्मत ही नहीं की. द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर. अब वो हंस पड़ते हैं जब दीवान ने कहा कि स्वॉर्ड से शादी की है आपके पूर्वज ने, आप गन से कर लीजिए, टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है. इन एट दिस द किंग क्रैक्ड ऑफ लाफ्टर मीन्स वो बहुत ही हंस पड़े. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, but a girl from the ranks of human being. He said that he doesn't want to marry with a tiger or with a gun. He want a girl from the ranks of human being, means a girl, and she should be a human being. First, you may draw up statistic
of tiger population and the different native state. But first of all, Diwan has to statistic means एक नंबरिकल उसको पॉपुलेशन बतानी है टाइगर की डिफरेंट नेटिव मतलब आसपास के जो स्टेट है वहाँ पर देखना है कि कौन से किंगडम में ज़्यादा टाइगर्स थे. नेक्स्ट, यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देर इज़ अ गर्ल I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. So first of all, Diwan has to find out the large population of the native state के पास में अगर कोई स्टेट हो जिसमें बहुत सारे टाइगर्स हो. एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि वहाँ पर उसकी कोई प्रिंसेस मतलब राजकुमारी हो, बिकॉज ही वांटेड टू गेट मैरी विथ प्रिंसेस. जो राजकुमारी हो उसके साथ ही वो शादी करेगा विथ. बट that state must be having the large tiger population के जहाँ पर बहुत सारी large tiger की population हो, so he can hunt the tiger and fulfill his desire. The Diwan followed his order. He found the girl from a state which possesses a large number of tigers and he was lucky. मिल भी गया, गर्ल भी मिल गई और yes, large population of tiger का state भी मिल गया. Maharaja Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. जब वो father-in-law को visit करने जाते थे ससुर को मिलने के लिए, at that time he killed 5 or 6 tigers. In this manner, 99 tigers skinned adorned the walls of the reception hall in the Pratibandhpuram palace. अब पैलेस में चमकने लगे कितने 99 tigers के skin. Here the word adorned means decoration. उसके पैलेस में डेकोरेशन हो गया. हाँ, in the Pratibandhpuram palace was adorned, decorated with the 99 tigers skin. अब एक ही टाइगर था, वो बाकी था मारने के लिए. Student, I am also asking you one question which is for the homework. When and why did the Maharaja decide to get married? When and why did the Maharaja decide to get married? Next question is, what will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? Again, what will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? I hope you have noted all the 4 questions that I have told you during the lesson. And please don't write the question too much long. These are the short question and answer. You can write it in a short means 30-40 words. And also I have given you some of the vocabulary. You can write in your notebook also. Thank you. Have a good day. Have a nice day.